In the name of Almighty, let's start this very important discussion on Mppsc. ठीक है, Assistant Professor English Paper 2, and this was the paper which was conducted on 9th of June, and it's going to be very important paper. In the paper, I have already circled blue circles. That means these questions will be important for our all TGT, PGT aspirants. And the other questions, of course, are very important for NET aspirants. Focusing on the TGT, PGT questions, we will also try to solve the complete answer key of this question paper. Some of the questions are, of course, in doubt. So let's see. Let's begin. So let's start with question number 1. Okay. First question is, which religion is not mentioned by E.M. Foster in his Passage to India? Okay. Passage to India is a very important novel which was published in the year 1924, and E.M. Foster is, as we know, that is going to be a very important writer, especially for NET aspirants as well. So he did not mention Judaism in his, you can say, novel A Passage to India. Christianity, Islam, and Hinduism were mentioned. Okay. So let's move on to question number 2. According to I.A. Richards, the wasteland puts on record. Very important question. Important, I will mark it as important as well. So according to I.A. Richards, wasteland actually puts on record the plight of a whole generation. That means the whole generation which suffered from the spiritual crisis. What is the main point of, you can say, this great modern poem? The main point is spiritual crisis or spiritual debacle, as we say. That is the main point of, you can say, of discussion in this very important poem. Just for your information, I.A. Richards also called wasteland as music of ideas. What did he call it as? Music of ideas. If you don't know, or if you want to write, you can write. I.A. Richards is a famous, you can say, Cambridge critic, and also he is called as a, you can say, critic of new humanism, new liberalism also. Liberal humanism, sorry. Liberal humanism. For NET aspirants, they can write this term, liberal humanism. Okay. So next question, question number 3. It's a very important question because this novel is in our course. Mrs. Dalloway of Virginia Woolf, Septimus, the character who committed suicide, he suffers from, of course, mental problems. He suffers from mental problems. Okay. So iska answer, third answer would be B. So he suffered from mental problems. Next question, Fernhill. Actually, Fernhill is written by Dylan Thomas. Dylan Thomas is a, as we know, is a 1940s poet. He is called as poet of 40s. Okay, he was a great poet of 1940s, and he wrote this poem about the lost childhood. So the answer is A. The fourth question, the answer is A. Lost childhood, and Dylan Thomas is called as poet of 40s, right? So question number 5, which of the following events is the subjection of discussion at the very beginning of the play? So in this question, they have not mentioned the name of the play. Of course, we are referring to The Doll's House by Ibsen. It's a very important question for NET aspirants. So The Doll's House, at the beginning, they were discussing Torvald's promotion to manager of the bank. So the fifth question, the answer is C. Okay. Then sixth question, Edison wrote 19 essays in the Spectator. Look at the quality of the questions, guys. I really admired the quality, the way these questions have been asked, and it's going to be very helpful for all of the aspirants. Okay, so he wrote 19 essays in the Spectator. Then identify the title from the given option. So he wrote actually these essays on the topic Paradise Lost. Very important question. So Edison wrote in the Spectator. This can be asked in your Neoclassical. So Edison wrote the Spectator 19 essays. You must write this fact also, that he wrote 19 essays on the topic Paradise Lost. Very, very important question. Okay. Question number 7. Which of the following movements did not O means credit its origin to Romanticism? This question I have marked as very important. That which of the following movements did not contribute to the origin of Romanticism?
So this question demands a lot of conceptual clarity. So as I have told you in my morning class also, that the answer to this question is naturalism. Naturalism was just opposite of romanticism. It was actually realism. It's an extension of realism, right? Naturalism is an extension of realism. Now the key fact for all of us to consider here is that symbolism, expressionism, and surrealism, all these three movements, okay, they are directly related to romanticism. If you want to quickly write, you can write symbolism, expressionism, and surrealism. These are all subjective movements. The key word here is subjectivity, and subjectivity relates to romanticism. Okay. Then how many parts Coleridge's Rhyme of the Ancient Mariner is divided? So guys, very important, 7 parts. It's divided into 7 parts, right? So B is the answer. Okay, it's included in the lyrical ballets, we know. Okay, first poem of lyrical ballet, 1798. Here lies one whose name was written in water. Very easy question for all of us. Okay, it's John Keats' epitaph, we know. Then next question, which character in Tom Jones has been described as a warm-hearted, hot-tempered, fox-hunting, Tory country gentleman? Very good question that they asked, really, from the very deep. So the answer, most of the candidates, gave the answer as Tom Jones, which was incorrect. The answer to this question is Squire Weston. Squire Weston. Okay, Squire Weston was the daddy of the beloved of Tom Jones. Okay, he was the daddy of the beloved of Tom Jones. Okay, so Tom Jones is considered as the greatest picaresque novel of English literature. Okay, it is of course written by Henry Fielding, greatest picaresque novel of English literature, and who called that Tom Jones as one of the 3 best plots? Who called one of Tom Jones as one of the 3 best plots? Coleridge. Coleridge. Okay, so the answer is B, and Coleridge called Tom Jones as having one of the 3 best plots. Okay, right. Moving to the next question. Emerson begins his essays. This is a question from American literature. Emerson actually wrote a very famous essay, Self-Reliance, and he took an extract from Civil Disobedience, which was written by his disciple Thoreau. Okay, very important question. Civil Disobedience, guys, we know Gandhiji was also hugely influenced from this essay, and it was written by Thoreau, right? So question number 12, which motto does Thoreau heartily accept in the beginning of Civil Disobedience? Very important question, very, very important question. The answer, guys, is the government is best, that government is best which governs least. This was a slogan given by Thoreau in the beginning of this essay, Civil Disobedience. Okay, very important question this one, because Gandhiji is there in our course as well. Okay, moving to the next question. When lilacs last in the dooryard bloom, the poet mourns the death of Abraham Lincoln, of course. It's an elegy on the death of Abraham Lincoln. So question number 13, the answer is B, right? Question 14, I have marked as very important. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. It's a question which was very deceptive. Some of the students did not think that such would be the answer. The answer to this question is actually A, the road not taken. It's a line taken from one of the often quoted poems of Robert Frost, The Road Not Taken. But those who have read the text thoroughly, they would have answered it. Okay. So the question is taken from, again, from Robert Frost, The Road Not Taken. Very important poem. Okay. And then this question is a little, you can say, tougher than the earlier question. When butterflies renounce their dreams, I shall but drink the morale. Very famous line, of course. It's written by Emily Dickinson in the poem, I taste a liquor never brewed. Okay. So this is written by, the topic is Emily Dickinson. Emily Dickinson wrote this poem, I taste a liquor never brewed. Okay. Then we have got some questions lined up from the research field, very important for our all aspirants related to NET and USET. So the research method where manipulation and control of variables, randomization of sample, the answer is C, experimental research is there. Then which of the following aims at finding a solution for an immediate problem facing a society? Applied research. In applied research, we try to find a solution
immediate problem, solution to an immediate problem. Then 18th question is very interesting one, factual question. Coefficient of correlation. Right from your mathematics days, you must have studied Pearson's coefficient of correlation. So the answer is Carl Pearson. Carl Pearson is the originator of coefficient of correlation. Then one-time research. One-time research that you do is called as longitudinal research. It is called as longitudinal research. Okay. Then data which have collected and analyzed by someone else is of course secondary data. There are two things only in research, primary and secondary. There is no such thing as original or inadequate. So व्यभिचारी भाव और संचारी भाव, very important. व्यभिचारी भाव और संचारी भाव, they are called as complementary psychological states. So the answer is A. Then which of the following is correct? So if you read all the statements thoroughly, you will find that क्रोध स्थायी भाव evokes रौद्र रस. The स्थायी भाव of क्रोधा evokes रौद्र रस. This is the correct one. Okay. Then question number 23. Anand Vardhana's Dhawanyalok mentioned threefold division of meaning, emanating from threefold power of words, Abhidha, Lakshana, Vyanjana. 23, answer is B. 24 is again, I have put it in the black circle, very important. According to Aristotle, tragedy evokes in us, of course, the C is correct, pity and fear. Tragedy evokes in us pity and fear. Then anagnorisis, I have already taught in my class lectures. It means critical discovery of a character. Anagnorisis is, कैसे याद कराया था हमने, A D, A से anagnorisis, D is discovery, and then P R, peripeteia, refers to R, that is reversal of fortune. Okay, A D P R, remember this code. A is anagnorisis, D is discovery of truth, and then P is peripeteia, and R is reversal of fortune. So ADPR, just remember this and you will be through this question. In Farewell to Arms, there is a description, very famous novel by American legend Ernest Hemingway. This description was in the mountains. The fighting was going on in the mountains. Okay. Then 27, I have marked it as very, okay. 27 I have marked as important, but I think it's not going to be that important because I think at MD level, this question will not be asked about Alice Walker. So maybe there is some, means I have marked it wrongly. So just for your information, the answer is B. He's saying that which of the following is mismatched. Alice Walker's The Color Purple came in 1982 actually. So this year is mismatched. It's a very famous novel. Alice Walker is remembered for Black American feminism, and Color Purple is considered as high point of Black American feminism. Okay. Then Amitav Ghosh, The Shadow Lines. Amitav Ghosh, The Shadow Lines. It's very important, I think. I must have missed the mark here. So put the mark here. Very important, this question. The Shadow Lines focuses on the narrator's family in. Yes. Who is going to answer this one? In the Shadow Lines, look at the question there, the way they have asked. He is not asking about the two main characters and their families. He is asking about just the narrator's family. So the narrator's family, part of it was settled in Kolkata, and the second, you can say, set of relatives, they were settled in Dhaka. So Calcutta and Dhaka is the correct answer. Very good question, this one. Okay, 28, C. And then 29. In Bharati Mukherjee, Jasmine was 17-year-old girl. Okay, so then 30. Then one day the peculiarity of his name becomes apparent. He is 11 years old in the 6th grade. So this is not in our course, but still the answer is The Namesake. The Namesake is written by Jhumpa Lahiri. Yes, Jhumpa Lahiri is a very important writer for NET aspirants. Actually, Jhumpa Lahiri wrote The Interpreter of Melodies. Okay, the same Jhumpa Lahiri. Then the next question is, when King Dushyant sees his son for the first time in the ashram of Marich, the latter was playing with a lion cub. Okay, so that is taken from the play. Okay, then who transposes Devdutt's head on Kapila's body and Kapila's head on Devdutt's body? ये तो है हमारे कोर्स में, गिरीश कर्नाड का कौन सा प्ले है?
हयावदना, वेरी गुड। हयावदना का है रेफरेंस, इसलिए उठाया मैंने। हयावदना का तो पद्मिनी ही करती है बाय मिस्टेक। ठीक है, सो आंसर इज 32 का सी। 32 का सी। गिरीश कर्नाड का तुगलक है, ठीक है, बट ये रेफरेंस ले लिया। Who utters the following lines to Jairaj in Dance Like a Man? Actually, Dance Like a Man is a very famous play by Mahesh Dattani. Very important writer for net aspirants, Mahesh Dattani. Please pay attention. But I am saying Mahesh Dattani is the first Indian playwright in English to win Sahitya Academy. He is the first Indian playwright in English to win Sahitya Academy. So, Dance Like a Man, actually, in this play, his wife, Jairaj's wife, Ratna, says this line. Okay, so the answer is A. It's a play which is based on male exploitation by a female. It's a play in which husband is exploited by the wife. Reverse happens. Okay, which of the following images has not been directly used by Tagore in the first song of Gitanjali? So here, actually, the answer is आइज। हैंड्स का भी उन्होंने यूज किया है फर्स्ट सॉन्ग में। फ्लूट तो बहुत फेमस इमेज है फर्स्ट सॉन्ग की, जिसमें वो कृष्ण से कंपेयर करते हैं उनको, और वेसल भी है ही, ठीक है। सो द आंसर इज बी। बी इज नॉट डायरेक्टली टेकन बाय टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी क्वेश्चन। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, सो द नेम वाज गिवन बाय ऑफ कोर्स एम के गांधी। वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन इन आवर क्लास। द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस। 36 in MLA style, बहुत important question for net aspirants. MLA style in research, the work cited, they are actually arranged alphabetically as per the author's last name. So this is the method of arranging the work cited page. Okay, a research paper written as per MLA format should have 12 font size. 12 font size. The first step in research is to identify a problem. Which of the following is not a research objective? To publish unverified data is never a research objective. Then the metaphor of clothes, very important question. Was the hope drunk wherein you dressed yourself? Can anyone tell me this line? A famous play by Shakespeare. Was the hope drunk wherein you dressed yourself? So the answer is Shakespeare, and the play is Macbeth. Macbeth. Okay, I think Macbeth is there in our course. Yes, so very important then. It's a personification. Question number 42, very important. Revenge is a kind of wild justice. इतनी बार पूछा है ना ये question. The answer is Bacon. Bacon of revenge. Okay. Then as per Bacon, now this is a question where I want to apply your mind. I want to see how you apply your mind. Very quickly, looking for the answers. As per Bacon in his essays of studies, studies provide delight through dash. The answer to this question, guys, is C. Actually, studies provide delight. He's asking us that how can study, or how does study provide delight when we are, private, when we are all alone and we are reading a book. Then that is where we get the delight. Okay. ऑर्नामेंट तो आपकी स्पोकन स्किल्स के लिए, डिस्कोर्स भी आप जब बोलते हो तो धारा प्रभा आपकी स्पोकन जो स्किल्स 4 स्किल्स बताई थी उनमें से है। बट स्टडीज के लिए जो हमें डिलाइट कब मिलता है? जब हम अकेले होते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हु इज द फादर ऑफ किंग आर्थर इन ले मोर्टे डी आर्थर? उल्हेर पेंड्रागन। ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ Jewish मनी लेंडर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस? Shylock, of course. Shylock. Then in Orientalism, Edward Said describes the intelligent tradition of defining and constructing the Orient. Gender, according to Judith Butler, is not biological but performative. This is a very important word for all net aspirants. Judith Butler actually is known for performativity. She is a LGBT critic. Okay, she is a LGBT critic. Okay, lesbian, gays, bisexual, transsexual, we say. What is the event which essay structure, sign and play by Derry refers to? An epistemological break with structure is thought. Okay. Then
What are the three phases of literary feminism according to Elaine Showalter? So the answer is feminine, feminist, and female. Then what is T.S. Eliot's concept of tradition? Now this question is ambiguous. According to us, both the answers are correct. Fusion of past and present, sense of present temporary. But okay, yes. Sorry, B answer is incorrect because temporality. The word that Eliot gives here is temporality, and in the option it is temporarity. So based on that, this option rules out itself. So the answer is A. Dialect is a social variety within multiple language. Okay. Then figure of speech, my daughter is an angel. Yes. Metaphor. It's a metaphor. Okay. Figure of speech, the plowman homewards plods his weary way. Yes. Transferred epithet. Weary way. Okay. We know about weary way. Okay. Tragedy gives rise to feeling of pity and fear. This is an instance of course, we know that this is an instance of catharsis. Okay, catharsis is when the purgation of feeling happens, emotions happens. Tense walls. Now this question also we could not get the satisfactory answer. So let's leave this question for the time being. We'll wait for the answer key. Then what was the name of this question actually? You know, we applied a lot of our sense and logic and all those things, but ultimately the answer was incorrect. So the correct answer was death's duel. Actually, this is the sermon that he preached, and it's in your book. So it's a very important question. I would really like you to write down the complete question, like John Donne's own funeral sermon, which he preached in 1631. The answer is Death's Duel. Then John Donne's collection of poems that contained the song The Good Morrow published. The answer is Songs and Sonnets, actually. Songs and Sonnets. What was the name of Andrew Marlowe's most contemptuous work? So contemptuous means the one where he criticizes the system. So the answer is C, Growth of Popery and Arbitrary Government in England. It was a different kind of question. Which play of, actually there is a typo here, Dryden hona chahiye. Which play of Dryden established him as a playwright? The answer is B, The Indian Emperor. This was first successful play of Dryden. Then what was Absalom and Achitophel published in 1681? It's again by Dryden, mock satire, mock epic. Then dash or S is a dash sound, voiceless sound. It's a question from linguistics. Then dash are formed by the word formation rule. Add the suffix er to a verb, like write plus er, win plus er. So we call such forms as agentive norms in grammar. Okay. Transformational generative grammar is a linguistic analysis. Bantu syllable, it's a very new question for us. We could not get the answer. So I'm putting it in the doubt. Then by which technique a researcher can study visual display of the locations in the brain? So PET and MRI. PET and MRI. Okay. But still some doubts are still there, but still 90% this is there. Then come to question number 66. Very important question. H.G. Wells. Like H.G. Wells, I have told you, has written science fictions. Okay. And then I have also told you once in my class that he was also a socialist. So if you combine both the options together, the answer is utopian socialist. Some of the aspirants, they got trapped in first option. But if you look at first option, it's saying Marxist socialist, which is basically the same thing. Marxist and socialist, they both refer to the same concept. So that's why it's not the answer. Okay. Utopia, So it's a very good question. Then which of the following poets belong to the pre-Raphaelite? Now they were painter poets who belongs to pre-Raphaelite. Like that means three of them will not belong to. The answer is William Morris belongs to it. Okay. Then death is the end of life. Why should life or labor be? The answer is the Lotus Eaters. The Lotus Eaters. Very important quote by Tennyson. The last ride together, whom does poet contrast his failure with?
तो स्टेट्समैन, सोल्जर्स, पोएट्स एंड स्कल्पचर्स, इनके साथ तुलना करता है। ठीक है, तो 69 का सी। इसकी बड़ी फेमस लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, व्हाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स। आया कुछ मजा? ठीक है, चल रहा है पेपर में बढ़िया करके। हो रहे कुछ आंसर से। The sea is calm tonight. The tide is full, the moon lies fair upon the straits on the French coast. The light gleams and is gone, the cliffs of England stand. Of course, Dover's Beach. A very important war lyric expressing the futility of war. It's by Matthew Arnold. Okay, Victorian poet, Dover's Beach. Canterbury Tales. Who narrates the story of Palamon and Arcite? The Knight. It's the first story. Then Idylls of the King by Alfred Lord Tennyson was inspired by whom? Which work? Malory's Morte d'Arthur. Of course, Arthurian legends are there. Then Chaucer's Canterbury Tales, the pilgrims gathered at an inn called as Tabard Inn. Tabard Inn. Then Deusa. This question again is a very conceptual question. In the first book of Fairy Queen represents. So Deusa was a negative character, and you can say just the contrast of Queen Elizabeth. So Deusa refers to Mary, Queen of Scots. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, घुमा के पूछा। ठीक है, ब्रिटोमार्ट रिप्रेजेंटेड क्वीन एलिजाबेथ, ड्यूसा रिप्रेजेंटेड मैरी, क्वीन मैरी, who was the, you can say, step sister of Queen Elizabeth. Alliterative poem recounting a series of dreams with waking interludes to connect them. Piers the Plowman. Piers the Plowman. By Langland. By Langland. Dream allegory. Actually, ये question किस literary term से पूछा है? Dream allegory. It's an example of dream allegory, where the character watches a dream, sees a dream, and in the dream, the main story happens. Who introduced rhymed heroic plays in Restoration drama? The answer is Dryden. Dryden introduced rhymed heroic plays in Restoration period. Okay. Question 72. Those rules of old discovered, not devised, are nature still, but nature methodized. Who else but Alexander Pope? Okay, Alexander Pope quoted these lines. Here the word nature represents human nature or outside nature? Yes, it represents human nature. I have already discussed the word nature has two meanings. Okay, in Neoclassical age, the word nature represented human nature like Alexander Pope, and in Romantic age, the word nature represented the outside nature. Now, this question is a controversial question, or should I say, it really demanded the application of learned knowledge. They have asked the time span of Puritan age. ठीक है, पक्का आ सकता है ऐसा। And Puritan age, in my notes, if you look, I have already said that कि first half of 17th century है भाई, so 1603 to 1660. Now it's nowhere mentioned in the option. Now what you will do? How would you attempt this question? Okay. So what we will do, 1603 से यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन में 1603 नहीं है, फिर हम उल्टा लेंगे 1660 चेक करेंगे हर ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में है तो हम उल्टा करके आ जाएंगे और 1620 to 1660 आंसर। ठीक है, सो द आंसर इज ए। और अगर वैसे आएगा प्यूरिटन एज तो 1603 to 1660 भी होती है, बट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1620 to 1660। हाउ डिड वी डिड्यूस? रिवर्स चले गए, 1660 से हमने चेक करा इसको। The term metaphysical was used to describe the works of John Donne and George Herbert by 18th century critic. So 18th century critic तो इसमें से एक ही है, हम जानते हैं उसका, ठीक है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। Who became John Milton's assistant as Latin secretary? Of course, Andrew Marvell. एंड्रू मार्वल ने फिर मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को भी डिक्टेट किया था इन्होंने इनको। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। Who among the following is not mentioned by Vivekanand in the ideal of womanhood in the essay titled Our Motherland? So कुंती का रेफरेंस नहीं लिया विवेकानंद ने, सीता, सावित्री और दमयंती का लिया है। फिर इसमें लेवियाथन बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्क है, नॉन फिक्शन ऐसे है। लेवियाथन यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है? सी मॉन्स्टर, समुद्री दैत्य को रिप्रेजेंट करता है। कृष्णमूर्ति के ऐसे में व्हाट आर वी सीकिंग? सो द आंसर इज
नॉट रिलेटेड टू, सॉरी, नॉट रिलेटेड टू व्हाट आर वी सीकिंग। ये ऐसे है कृष्णा मूर्ति, जिद्दू कृष्णा मूर्ति साहब है, ये बहुत बड़े थिंकर फिलोसफर हैं। तो वी हैव टू सी इफ देयर इज इंटेलिजेंस इन अस, ये जो है हम नहीं खोज रहे हैं, ठीक है। जिद्दू कृष्णमूर्ति इज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, वी विल गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये कोई सेंस नहीं है इस स्टेटमेंट का। आइडेंटिफाई द सेज हु कर्सेस शकुंतला फॉर बीइंग हीडलेस टू हिज कॉल, हीडलेस मतलब ध्यान न देना। तो शकुंतला को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया होता है, ठीक है, तो दुर्वासा इसका आंसर है, ठीक है। कौन सा प्ले है ये? अभिज्ञान शकुंतला, नाम से क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन इसका वहां भी आया था, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 86, thus I live in the world rather as a spectator of mankind than as one of the species। स्पेक्टेटर वर्ड से निकाल लोगे 18th सेंचुरी में जोसेफ एडिसन ने स्पेक्टेटर ऐसे भी लिखा है, स्पेक्टेटर वर्ड की भी बात हुई। वॉइस टू हॉर्नहेम्स, गुलिवर ट्रेवल्स का वर्क है जोनाथन स्विफ्ट का। तो हॉर्नहेम्स जो है आधा घोड़ा आधा इंसान की शक्ल के होते हैं, तो ये बुक 4 में आए हैं, ये बुक 4 में आए हैं। ये क्या है, रीजन पर सटायर है, मानवीय हर चीज की वजह तर्क लगाता है जो इंसान, उस पर सटायर। बोसवेल का ये क्वेश्चन ने बहुत ज्यादा दिमाग खर्च कराया मेरा, तो पेपर में व्हेन आई वाज थिंकिंग, तो 90% बच्चों को ये लग रहा था, इवन मुझे भी, कि भाई लाइफ ऑफ जॉनसन लिखी है बॉसवेल ने, तो जॉनसन को ही समर्पित होगी। लेकिन इसका आंसर जॉनसन नहीं है, इसका आंसर है, ये है जोशुआ रेनॉल्ड को डेडिकेटेड। लिखी तो डॉक्टर जॉनसन के ऊपर है, लेकिन डेडिकेटेड, कितना प्यारा क्वेश्चन है, इज डेडिकेटेड टू जोशुआ रेनॉल्ड्स। तो ये मैं जोशुआ रेनॉल्ड्स भीड़ से थोड़ा हट कर करके आया, और यहाँ पर थोड़ा सा करेज होने का फायदा मिला, ठीक है। तो करेज अगर इंटेलिजेंट तरीके से लगाया हो तभी फायदा होता है, नहीं तो फिर पिटने में भी देर, ठीक है। 1791 का हो गया आपका लाइफ ऑफ जॉनसन, ठीक है। ठीक हो रहा है सब लोगों को, एक बार ओके कर देंगे सारे बच्चे। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 89। If this be but a vain belief, yet oh, how soft in darkness, oh, oft in darkness, and amid the many shapes of joyless delight. Actually, this word joyless delight somehow reminded me an abstract image. And when it came to abstract poetry, the answer actually I thought to be Ode to a Skylark, but the correct answer of this is Tintin Abbey actually. So the correct answer is Tintin Abbey, 89th. It's written by, of course, the great Wordsworth. Who among the following poets is not known as the poet of the age of transition? So age of transition, that means pre-romantic. इनमें से कौन सा pre-romantic नहीं है? Yes, anyone? Please try this question. 90. Offline, online. Okay. Please now look for the answer. Look, Cowper is a pre-romantic. Blake is, of course, the leader of the pre-romantic, and Crabbe is also pre-romantic. Pope in verse talking हम कहते थे. तो आंसर है Edmund Waller. The answer is Edmund Waller. He actually was the mentor of Dryden actually. So इसीलिए he is not the poet of age of transition. Now age of transition बोले तो कौन सी century, कौन सी age? Mid 18th century. Mid 18th century, age of transition. Ben Jonson's comedy Every Man in His Humor was published in 1598. 1598. ठीक है. Ben Jonson wrote two comedies, Every Man in His Humor or Every Man Out of His Humor. ठीक है. Which among the following in Dr. Faustus is not among the 7 deadly sins? The answer is very good. Hunger is not one of the 7 deadly sins. बाकी तीनों है, कवर्टियसनेस, लालच, ग्लटनी, ज्यादा खाना, लेचरी। क्या होता है लेचरी? अच्छा, लेचरी मीन्स अय्याशी करना, ठीक है। सो वो भी एक तरीके से आपका सिंस में आ जाता है। तो ये जो है आपके 7 सिंस हो गए, इसमें से एक हो गया, ठीक है। Where was Dr. Faustus born as per the chorus in Marlowe's play? Actually, Dr. Faustus was born in Wittenberg. It's a place in Germany. Wittenberg. वहीं से पढ़ा हुआ भी है वो, जर्मन प्ले है ना, आपको पता ही
विटन मंक। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा ढंग से देखना है। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द कैरेक्टर पोलोनियस, वेरी इजी क्वेश्चन, हैमलेट। हैमलेट में ओफिलिया का फादर है पोलोनियस, ठीक है। Who is called as abhorred slave? Abhorred means इसको बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। Abhorred slave है कैलिबन। कैलिबन दिखने में भी बड़ा अजीब सा है। Computer is used in research for data analysis. When factual information from the respondent is desired, we use questionnaire, numerical scales, graphic scales, percentage rating, standard scales. Scales of cumulated points and forced choice scales are type of rating scales, of course. What kind of research is the application of scientific method to the description of analysis of past events? Historical research. Random sampling is helpful in providing each element in the population an equal chance, yeah, probability. In the preface to the life of Samuel Johnson, Boswell says, loyal Johnsonians may look upon such a book with a dash. तो उसमें बहुत दिमाग लगाया मैंने कहा लॉयल भी कह रहा है, जॉनसोनियंस भी कह रहा है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव कह रहा होगा आगे कि वो इस किताब में कोई बहुत ज्यादा चापलूसी भरी किताब नहीं देखेंगे इसको। तो ये आंसर है मेजर ऑफ स्कॉर्न, सही हो गया था। स्कॉर्न का मतलब आपको पता ही है, किसी को किसी के लिए कुछ कहना, निंदा करना, ठीक है। ये क्वेश्चन डाउट में रहा भाई हमारा। इसमें चैप्टर्स को हमने फिजिकली चेक किया बुक के अंदर, बट कोई सा भी चैप्टर हमें मैच नहीं किया, तो ये डाउट में लग रहा है, क्वेश्चन शायद कट हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर्स के नेम से पूछे हैं इसमें। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेज, ओड एन अग्रेशन एंड रिप्रेजेंट्स डैश, क्या होगा? अगर आप बाकी के ऑप्शंस देखोगे तो कोई भी ऑप्शन इसमें फिट नहीं हो रहा है। आंसर इज सिंपली ब्यूटी, इट रिप्रेजेंट्स ब्यूटी, ठीक है। अगर आप देखोगे एस्केप फ्रॉम चेंज, डिके इनटू इटर्निटी नहीं है ना, डिके थोड़ी होगा इटर्निटी में, समझ रहे हो। कार्पे डीम नहीं है, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ तो है ही नहीं, ठीक है। आप थोड़ा सा ढंग से सोचना, पॉन्डर करना, तो आपको पता चल जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो कब पब्लिश हुआ? 1719 में। इसकी डेट याद कर लेना भाई, 1790। द फर्स्ट इश्यू ऑफ द स्पेक्टेटर, तो स्पेक्टेटर का फर्स्ट इश्यू हम लोग जानते हैं 1711, 1711 में पब्लिश हुआ, 1712 में जो है तक चला है। अब देखो ये आ गया क्वेश्चन, ये भी इसका आंसर हमें मिला नहीं, किसी को मिलेगा तो बताना। इनमें से कौन से नॉवल को हार्डी के ट्रेजेडी ऑफ अ वुमेन कहा गया? अब कई बच्चे तो इसमें टेस्ट कह रहे हैं, बट मुझे लगता है कि सी होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मेयर ऑफ कास्टरब्रिज को ट्रेजेडी ऑफ अ वुमेन कहीं पढ़ा हुआ याद आ रहा है मुझे। हाँ, अपनी बीवी को भेज देता है, क्योंकि ऊपर अगर ट्रेजेडी ऑफ अ वुमेन टेस्ट के लिए नहीं कहेंगे, उसका तो सब टाइटल ही था अ प्योर वुमेन। तो कंफ्यूज क्वेश्चन है, बट आंसर इसका सी होगा, है ना। तो ये अपना यही नॉवल हमारा लग भी रहा है ना इस बार। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिल गया आपको। रॉबर्ट ब्राउनिंग की लास्ट राइड टुगेदर पहले कब पब्लिश हुई? 1855, 1855, द लास्ट राइड टुगेदर। रैफल कौन है बताओ, पढ़ा रखा है? रैफल पेंटर है, बिल्कुल, इटालियन पेंटर। भी रैफलाइट्स भी यहीं से बने, ठीक हो गया। चार्ल्स डिकेंस, इतना इजी क्वेश्चन कुछ बच्चे गलत करके आए। ऑफन इंक्लूड्स, इनकॉर्पोरेट मतलब इंक्लूड ही होता है, पेनफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज यूथ इन द सिटी ऑफ डैश, बताओ। ऑफ कोर्स द आंसर इज लंदन, लंदन में ही रहे हैं चार्ल्स डिकेंस, लंदन की सिटी को बताएंगे, ठीक है, लंदन की सिटी को बता रहे हैं। लॉर्ड टेनिसन की पोएम यूलिसिस कब पब्लिश हुई? वन लाइनर है यार ये तो, बताओ। अरे 1842, 1833 में पहले आई अलग से, याद आ रहा है? 1842 में फिर ये पब्लिश हो गई। In which of the works Pope attack on greed and corruption of his days? Epistle to Dr. Arbuthnot, घुमा के पूछा है। एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनेट में कुछ बच्चे ऐसे ऑन मैन कराए, ऐसे ऑन मैन इसलिए नहीं है क्योंकि ये फिलोसफिकल वर्क है, यहाँ पर वो फिलोसफी के बारे में नहीं कह रहा, सटायर कह रहा है, ग्रीड एंड करप्शन। हु इज द शॉक, नेम ऑफ शॉक इन रेप ऑफ द लॉक? बेलिंडा का लैपडॉग का नाम है शॉक। जॉन बनियन की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ग्रेस अबाउंडिंग, शॉर्ट में याद रख लेना, ग्रेस अबाउंडिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है। What was the full name of Pilgrim's Progress?
The pilgrim's progress from this world to that which is to come. B is the answer. What was Robert Burton's ailment from which he suffered throughout his life? The answer is hypochondria. Hypochondria बीमारी से वो सफर करते हैं अपनी लाइफ में, रियल लाइफ। बर्टन ने वैसे क्या लिखा है? एनाटॉमी ऑफ मेलंकली वाले बर्टन। ठीक है। जेएम सिंज आ गया, बताओ भाई। जेएम सिंज राइडर्स टू द सी में क्या करना चाहता है? एंग्लिसाइज आयरलैंड, एंग्लिसाइज इंग्लैंड, डी एंग्लिसाइज इंग्लैंड, डी एंग्लिसाइज आयरलैंड। इतने बार मैंने पढ़ा दिया, कब तुम लोग यार सुधरोगे? अरे यार मेन पहले ये बताओ कि आयरलैंड की कहानी है कि इंग्लैंड की? आयरलैंड की, तो आंसर में लास्ट में आयरलैंड आना चाहिए कि इंग्लैंड? ऐसे करो इस क्वेश्चन में, आयरलैंड आना चाहिए ना, तो इंग्लैंड वाले तो दोनों ऑप्शन आउट कर दो, ऐसे कर रहे हैं। ठीक है। अब वो आयरलैंड को इंग्लिश लैंग्वेज में उसने दिखाया है या फिर आयरलैंड को आयरिश लैंग्वेज में दिखाया है? आयरिश में दिखाया है ना, तो आयरिश में दिखाया मतलब एंग्लिसाइज किया है या नहीं किया है? एंग्लिसाइज का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाया है, और डी एंग्लिसाइज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं दिखाया, आयरिश में दिखाया। तो किस में दिखाया? आयरिश में ना। आंसर क्या है इसका? डी। ऐसे निकालेंगे, डी एंग्लिसाइज आयरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के याद कर लेना इसको। डी इज द आंसर। पढ़ा था, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना था बस। इनमें से कौन सी एक थीम नहीं है सन्स एंड लवर्स की? वुमेन्स वर्क एंड वुमेन्स राइट्स की बात नहीं है इसमें, बाकी चीजें हैं। द सेकेंड कमिंग कौन से मिथिकल क्रिएचर की बात करता है सेकेंड कमिंग में? स्फिंक्स ये है। वैसे इसको हम वो भी कहते थे ना, इसका एक नाम और था ना, स्पिरिटस मुंडाई, याद आ रहा है? स्पिरिटस मुंडाई, ये वर्ड भी नोट कर लो। आर्कटाइपल इमेजेस कराई थी, यूनिवर्सल इमेजेस होती थी कुछ जो अक्रॉस द कल्चर सेम रहती थी, याद आ रहा है? टॉपिक का लेक्चर में जाके सुनना। स्पिरिटस मुंडाई, स्पिरिटस मुंडाई क्या है? एक तरीके से यूनिवर्सल इमेज है, इसमें हाफ लॉइन होता था और हाफ ह्यूमन, उसी का दूसरा नाम स्फिंक्स भी है। अच्छा क्वेश्चन है ये। विच इंडियन फिलोसफिकल सोसाइटी, ठीक है, एल्डर्स हक्सले ज्वाइंड इन कैलिफोर्निया वेदांतिक सोसाइटी? वेदांतिक सोसाइटी। द ऐसे ऑन द रूल ऑफ द रोड बाय एजी गार्डनर, ये ऐसे मैंने आपको इस बार नहीं पढ़ाया था, बट इसमें वो बात करता है कि लिबर्टीज की, जो हमें छूट मिलती है, सामाजिक छूट, उसकी बात करता है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जॉर्ज इलियट? मैरी एन इवांस। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का फेमस ऐसे ऐसे ऑन मिल्टन कौन सी मैगजीन में छपा है? तो ये क्वार्टरली में छपा है पहले, फिर और मैगजीन्स में भी छपा है, पहले क्वार्टरली में छपा है। जीबी शॉ का आर्म्स एंड द मैन में कौन से वॉर की बात है? यस, बुल्गारिया एंड सर्बिया। ठीक हो गया। जैक बार्थविक जॉन गर्ल्सवर्दी के सिल्वर बॉक्स में आता है। जॉन गर्ल्सवर्दी की जो ट्रेजेडीज हैं उनको सोशल ट्रेजेडीज कहा गया। ए.के. रामानुजन की जो पोएम्स हैं ये किस कलेक्शन में छपी हैं? द स्ट्राइडर्स में। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने फादर की डेथ को याद करते हुए कौन सी फेमस लाइन जो बोली थी? अर्थ रिसीव्ड एन ऑनर्ड गेस्ट। अडन ने लिखी है इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। अर्थ रिसीव्ड एन ऑनर्ड गेस्ट, W.B. Yeats इज लेड टू रेस्ट। पूरी लाइन है, अर्थ रिसीव्ड एन ऑनर्ड गेस्ट, W.B. Yeats, सॉरी, अर्थ रिसीव्ड एन ऑनर्ड गेस्ट, W.B. Yeats वाज लेड टू रेस्ट। तो कौन सी फेमस पोएम है? इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। एलेजी है ये, ईट्स के ऊपर अडन ने लिखी है, इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। उस एलेजी के अंदर से लाइन पूछी। Who translated the major portions of Gandhi ji autobiography from Gujarati to English? महादेव देसाई, ऑफ कोर्स पढ़ा रखा है। मुल्कराज आनंद का नॉवल अनटचेबल कितने दिनों की लाइफ को दिखाता है बखा की? वन डे, एक ही दिन, सुबह से लेकर शाम तक की पूरी जो दिन की गतिविधियां हैं उसको दिखाया गया। हर प्रेजेंस नेवर स्पोक, नेवर सेड एनीथिंग बट हर एब्सेंस स्पोक।
ये नहीं मिल रहा है हमें ना, किसी को मिलेगा तो बताना। The election of morning becomes Electra with the exception of an act of second play takes place in or outside the Menon residence. Morning becomes Electra किसने लिखा है भाई? यूजिन ओनिल, अमेरिका का ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है यूजिन ओनिल। मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। Sit is a character in same morning becomes Electra में ही। Act 2 of Look Back in Anger opens after 3 weeks. हैप्पी वैली, हैप्पी वैली एक्चुअली एक नॉवल है, किसका है? पैट्रिक वाइट, नोट कर लेना इनका नाम, पैट्रिक वाइट, ओनली नॉवेलिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू रिसीव नोबेल प्राइज, या ओनली नोबेल प्राइज विनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पैट्रिक वाइट का पहला नॉवल है और आंसर है इसका ए, ओनली नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। In chapter 2 of Adventures of Huckleberry Finn, Miss Watson's big neighbor named Jim who was sitting in the kitchen door. Huckleberry Finn से भी उठाया, देखो क्वेश्चन। I thought of London spread out in the sun, its postal districts packed like squares of wheat, where we were aimed. Philip Sidney, Whitsun Weddings. फिलिप सिडनी की फेमस, सॉरी फिलिप लार्किन की फेमस पोएम है विटसन वेडिंग्स। इन वर्जीनिया वुल्फ नॉवल मिसेस डैलोवे द इंडिविजुअल साइक ऑफ कैरेक्टर्स, हाँ बताओ क्या होगा? इंडिविजुअल सोसाइटी, इंडिविजुअल जो साइकोलॉजी है कैरेक्टर की वो किसके साथ इन्वॉल्व है? सोसाइटी के साथ, बिल्कुल। सोसाइटी को बार बार देख के ही कैरेक्टर अपनी बात कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अंदर से अप्लाई किया है इसमें। Burial of the Dead, T.S. Eliot, The Wasteland deals with the theme of fear of death. Burial of Death फर्स्ट पार्ट है वेस्टलैंड का। जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन डील्स विद द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड में जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन पर डील करता है। 139 छूटा, अच्छा सॉरी 139। वर्जीनिया वुल्फ का मॉडर्निस्ट नॉवल डेलोवे रेजेस द इश्यूज ऑफ लव एंड लोनलीनेस। लोनलीनेस से निकल जाएगा, की थीम है मॉडर्न नॉवेल्स की। 140 मैंने बता दिया, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट इज ए यंग मैन, आयरलैंड से डील करता है। ये बताओ स्पेशल और टेक्निकल प्रोफेशनल वोकैबुलरी। जार्गन, जार्गन बोलते हैं उसको, टेक्निकल वोकैबुलरी को। स्मॉलेस्ट कंट्रास्टिव यूनिट दैट में ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ मीनिंग। चेंज ऑफ मीनिंग में बताया था, एम से मीनिंग, एम से मॉर्फीम, ऐसे याद कर लो, अभी भी याद करा रहा हूं। साउंड का क्या था? साउंड का एस और पी, फिनीम, फिनीम साउंड, पी को सर्कल करो, पी एस और एम एम, ऐसे याद कर लो, नहीं तो याद नहीं होगा। The variety of language which is used in a certain geographical area, it is called as dialect. भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार इसमें वो होता है। X is a type of, यार ये भी नहीं मिला, लिंग्विस्टिक्स में साउंड को थोड़ा सा देखने में टाइम लग रहा है, क्लियर नहीं है। प्रकृत is a style of language, style of language, प्राकृत। How many sources of sublimity have been given by Longinus in his treatise? तो हम जानते हैं 5 sources of sublimity, 5 sources of sublimity. I.A. Richards का Principles of Literary Criticism can be regarded as an introduction to literary formalism. देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्नल्ड की जो फंडामेंटली पोइट्री है वो कंसर्न विद, तो हमने देखा था ना हाई सीरियसनेस, आर्नल्ड ने पोइट्री के लिए क्या यूज किया था? ये वर्ड हाई सीरियसनेस। तो सीरियसनेस के हिसाब से आप इसमें से कौन सा वर्ड चुनोगे? अब
डेस्टिनी, डेंसिटी, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, 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 ठीक है, हाई कॉम्प्लेक्सिटी। और किसके लिए उन्होंने कहा था कि डैश लैग्ड हाई सीरियसनेस? चौसर, है ना? हाँ, आर्नल्ड ने किसके लिए कहा था डैश लैग्ड हाई सीरियसनेस? तो चौसर। चौसर के वर्क्स में बहुत ज्यादा रफ ह्यूमर है ना, ये क्वेश्चन आएगा। अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड de Saussure, a linguist sign is a natural relationship between the signifier and the signified. और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, टुवर्ड्स द फेमिनिस्ट पोएटिक्स बाय एलेन शोवाल्टर, ठीक है, ये क्या है आपका? नहीं सॉरी, इसका आंसर था डी, स्टेट्स दैट गायनोक्रिटिसिज्म इज मेल डोमिनेटेड। ठीक हो गया। तो ये था साथियों, हम लोग ने सोचा था कि हमें 1.5 घंटा लगेगा, हमने